Starting this edition with some breaking news now coming in. The Ministry of Electronics and Information Technology has summoned Wikipedia executives in India to seek an explanation on how Indian cricketer Arshdeep Singh's Wikipedia page entry was changed to reflect Khalistan association. The high-level panel, likely to be chaired by the IT Ministry Secretary, would question Wikipedia executives in India about the checks and balances in place to prevent such edits. In fact, it turns out that there is a clear Pakistan link and a deliberate attempt that was essentially made by the ISI as well as Pakistan ISI to bring in a wedge between the Sikhs and Hindus, given the fact that there was an immediate change that was brought in to Arshdeep's Wikipedia page, calling him a Khalistani. Those links were basically being drawn up. This morning, the government basically taking cognizance of it, and the Wikipedia executives have now been summoned by the IT ministry. Let me also go across to our senior executive editor Abhishek Kapoor, who's getting us the latest details. In fact, a proper detailed analysis has also been done, Abhishek, and there is a clear reflection of the fact that this once again appears to be a design of Pakistan's ISI, because roughly around 11 in the night, soon after that catch drop took place, we saw that they swung into action, changes being brought into the Wikipedia pages. What more are you picking up? So what is interesting is that the moment the match gets over, Pakistani handles start projecting a picture as if Arshdeep is a Khalistani. These are all Pakistan based, and soon it starts trending. And there are important influencers like Wajahat S. Khan, like Naseem Akram. These are verified Twitter handles, and they start trending that Arshdeep is clearly a part of Pakistan-backed Khalistan movement. Now, what happens is, Shravan, that this gets picked up and amplified in India, even by some motivated handles. So, for example, there is this handle which is verified, blue Twitter handle called Tanmay Bhatt, the Tanmay, and it says Arshdeep's manager deleting Twitter and Instagram from his phone. Now, they are joining in. And what happens is, Shravan, that soon this starts trending. And it seems this has been done with an objective. We had seen this happening in the case of Mohammad Shami. We had seen this in the case of Harbhajan. And essentially what this means is that Pakistani deep state, using opportunities like these to create communal discord in India, communal divide in India. I think the objective must have been of these hashtags and trends, that they try to present a picture that Khalistan is very active, and so active that it has seeped into the general social fabric of the country, to the extent that even Team India, cricket team of India, has one Khalistani who at a very critical moment dropped a catch. That was the diabolical plan. Obviously, it has been exposed. You have a couple of guests with you, Shravan. You can go to them and they will tell you why and how of the trend that was picked up by them and then understood in a right manner. Of course, Shravan, remember, parallelly, these people in Pakistan also got onto the Wikipedia page of Arshdeep and edited it to include Khalistan as one of his affiliations. Now, interesting bit is, Wikipedia allowed it, and that's why the government of India, through the Ministry of Electronics and Information Technology, has written into Wikipedia and summoned its executives to and seek their explanation as to why they allowed this kind of editing to take place from the Pakistani shores. I think, as I said, Shravan, for the whistleblowers who exposed this and have brought this fact out, after which the government has acted, they are with you. You can go to them, both of them, Vijay Gajera and Anshul Saxena. They did some due diligence and took a deep dive on Twitter and brought out those facts for us. Well, I'll request you to stay on, Abhishek, as we also bring in our guest, whistleblowers Vijay Gajera as well as Anshul Saxena. Vijay Gajera is joining us from Gujarat and Anshul is from the national capital. Vijay Gajera, आपसे सबसे पहले ये सवाल करना चाहूँगा कि जिस तरह से एक ट्रेंड और एक पैटर्न हम देख पा रहे हैं कि मैच वो ड्रॉप होने के बाद ही
लगातार कई सारे ऐसे पैटर्न बन गए, ट्विटर ट्रेंड्स बन रहे थे और ट्विटर ट्रेंड्स जो बन रहे थे साफ तरीके से नजर आ रहा है कि वो आईपी एड्रेसेस पाकिस्तान से है। मैं चाहूंगा कि आप थोड़े विस्तार में बताइए कि आखिरकार ये पैटर्न कैसे निकला, कि कौन से देशों में से ये जो बॉट्स है या ट्विटर हैंडल्स है जो अर्शदीप को खालिस्तानी डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे थे। मैं चाहूंगा कि आप इसके डिटेल्स के बारे में बात कीजिए हमसे। सबसे पहले ये ट्रेंड पाकिस्तान से ही स्टार्ट हुआ। पाकिस्तान के कुछ जो अकाउंट थे वो उसने स्टार्ट किया लिखना, जैसे ही केस ड्रॉप हुआ तो उन लोगों ने लिखना स्टार्ट किया कि ये खालिस्तानी है वगैरह वगैरह। उसके बाद बहुत कुछ जो इंडियन जैसे दिखते वैसे अकाउंट, वो अभी चेक करना पड़ेगा कि वो क्या इंडियन ही है या नहीं, तो उन लोगों ने कुछ ऐसा लिखा। उसके बाद हमारे जो इंडिया के कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि एक सिविल वॉर जैसा माहौल हो, उन लोगों ने वो स्क्रीनशॉट निकाले और पर्टिकुलरली हिंदू और इंडिया को टारगेट करके लिखा कि ये लोग खालिस्तानी नाम से हर्षदीप को टारगेट कर रहे हैं। बट जब मैंने देखा कि वो ट्वीट इतना वायरल क्यों है, तो उसके जो रिट्वीट और लाइक्स है वो सारे पाकिस्तान से आ रहे थे। तो ऑब्वियसली है कि पाकिस्तान से उसको सपोर्ट मिल रहा था। उसके बाद जैसे अंशुल भाई ने डाला था स्क्रीनशॉट की जो चेंज किया गया था विकिपीडिया में, वो पाकिस्तान से हुआ था। तो ये सारे बहुत सारे ऐसे सबूत है। बहुत से अकाउंट आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। मैंने अभी एक अकाउंट देखा तो वो कश्मीर से था, तो वो अकाउंट अभी नहीं है, बट उसका कन्वर्जेशन देखोगे आप तो ऐसे लोगों के साथ है जो बुरहान वानी को सपोर्ट करते हैं। तो हिंदुओं को या इंडियंस को टारगेट करने के लिए या सिविल वॉर जैसा माहौल बनाने के लिए एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल जो इंडिया में काम करते हैं, उन लोगों ने पर्टिकुलर सिलेक्टिव स्क्रीनशॉट लेके एक माहौल बनाने का ट्राई किया कि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट या जो भी वो बोलते हैं और जो इंडियन है वो लोग ट्राई कर रहे हैं खालिस्तान नाम से पुकारने की इनको। तो इस तरह से पूरा जो प्रोपेगेंडा है वो दिखता है। हम लोगों ने काफी सारे स्क्रीनशॉट डाले हैं सोशल मीडिया पे। मैंने अंशुल भाई ने द होकाइज करके एक बंदा है उसने, कई लोगों ने, हमने रात में ये जब चल रहा था तब से ही हमने ये किया, क्योंकि प्रोपेगेंडा अलग लेवल पे चला जाता अगर रात को नहीं करते तो। मैं एक सवाल विजय अंशुल से भी करना चाहूंगा। अंशुल, जिस तरह से पाकिस्तान आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी के सपोर्ट में जितने भी कई सारे ऐसे ट्विटर प्रोफाइल्स हैं और लगातार वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं और ऐसे मामले में तो ओवर एक्टिव बन जाते हैं, अगर पाकिस्तान आईएसआई लिंक्स को अगर देखा जाए इसमें से, आपके इस जो इन्वेस्टिगेशन से या फोरेंसिक एनालिसिस जो आप कर रहे हैं उससे क्या पता चल रहा है? We'll try and reconnect with Anshul. I think so. There seems to be some audio problem. Perhaps our producers can also just check the audio line with Anshul. Let me just take this question to Abhishek. If you can just also, if you can also come in, we'll try and reconnect. We'll try and reconnect with our guest once again. It seems that we're having some problem with the audio line. Abhishek, the question that I was essentially asking is the role of Pakistan's ISI. One perhaps cannot brush it under the carpet simply because we've seen it in the past. They've been overactive, and there are certain Twitter handles who've been very close to the Pakistan ISI, and this has been known to everyone. What's their role in this? Well, it cannot but be that the Pakistani deep state is involved in this, Shawan. So irrespective of whether many of these Twitter handles are bots just retweeting, the fact is that somebody thought through it. Somebody created a narrative, put it on Twitter and other social media platforms and pushed it. And that's where the role of ISI or whichever, fifth generation information warfare agency the Pakistanis might have created might have come into play. It's great Twitter forensics, so to say, done by the likes of Vijay Gajera and Anshul Saxena, that we know it, and it got exposed to the extent that the government of India had to intervene, and an explanation has been sought by from Wikipedia, and they have been called to the ministry to explain in person. I think if you go by this
if you go by this analysis that has been brought out, it is clear, Shravan, that this is well coordinated, this is well conceived and executed. This is done with a certain objective in mind, as was being explained by Vijay, and they almost succeeded. Because remember, while this originated in Pakistan and with, say, a few hundred Twitter handles, it got amplified to about thousands back home in India, and people, some of them gullible, started believing in it. So obviously there was a plan and design and got some success before these whistleblowers came into the picture and the government really nipped it in the bud. Well, Abhishek, I'll request you to stay on. Anshul is also joining us on this broadcast. Anshul has also been part of this entire forensic examination and to try and look at what are the links that are essentially emerging. Anshul, मैंने विजय से भी यही सवाल की थी, आपसे ये करना चाहूंगा कि किस तरह से जो पाकिस्तान के लिंक उभर कर आ रहा है, क्योंकि आपने इस पूरे एग्जामिनेशन में आप ये कह रहे हैं कि जो आईपी डिटेल्स निकले हुए हैं वो आईपी डिटेल्स पाकिस्तान से हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ पाकिस्तानी मीडिया भी इसके पीछे है. आपके पास इस वक्त क्या जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? थैंक यू सो मच. मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जब इस तरह से हुआ था कि अर्शदीप सिंह जी ने एक कैच को ड्रॉप कर दिया, तो उसके बाद सबसे पहला काम ही ये हुआ था कि जितने भी पाकिस्तानी अकाउंट्स हैं उन्होंने उसी टाइम पर खालिस्तानी प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया. उन्होंने अभिजीत सिंह को टारगेट किया, उसको खालिस्तानी बोला, इस तरह की चीजें हुई. और उसमें वेरीफाइड अकाउंट्स भी हैं जो पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के हैं, उन्होंने भी ऐसे ट्वीट्स किए हुए हैं. और एक नैरेटिव बनाया गया कि किस तरीके से इंडिया जो है वो सिख कम्युनिटी के अगेंस्ट है और इंडियंस जो है वो अभिजीत सिंह को खालिस्तानी बोल रहे हैं, इस तरह का नैरेटिव बनाया. और ये बहुत सारे पाकिस्तानी अकाउंट्स ने ये काम किया, और यही चीज जो उन्होंने 1 साल पहले मोहम्मद शमी के साथ करी थी, वही एक्सपेरिमेंट इन्होंने यहाँ पर भी एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में अर्शदीप सिंह के अगेंस्ट किया. और विकिपीडिया पेज पर रात को ही 11 बजे के बाद से लगातार 2 घंटे तक उस पेज को डिस्टॉर्ट किया गया, काफी सारी चीजें एडिट की गई, उसमें खालिस्तान को ऐड किया गया, बहुत कुछ उसकी प्रोफाइल में एडिशंस किए गए. और उन सभी की एक लॉग हिस्ट्री होती है, जैसे कि जो भी आप विकिपीडिया पेज में जो भी आप चेंजेस करते हैं उसकी पूरी एक मेरे पास हिस्ट्री रखी है, पूरी एडिट हिस्ट्री रखी हुई है. अगर आप उन सभी को चेक करेंगे, सभी आईपी एड्रेस को ट्रेस करेंगे, तो सभी के सभी आईपी एड्रेस जो है वो पाकिस्तान से जो एडिटर्स हैं उन्होंने यूज किया और उसको पूरे पेज को एडिट किया हुआ है. तो ये एक इंफॉर्मेशन वारफेयर का हिस्सा है जो पाकिस्तान करता आ रहा है, चाहे वो क्रिकेट में एक अपॉर्चुनिटी देखता है, चाहे आपने देखा होगा कि जब जनरल बिपिन रावत जी का चॉपर क्रैश हो गया था उस टाइम उन्होंने ये चीजें करी थी. नुपुर शर्मा के केस में उन्होंने ये किया रिसेंटली, और आपने देखा होगा जो आर्टिकल 370 का जब एब्रोगेशन हुआ तब भी उन्होंने यही इंफॉर्मेशन वॉरफेयर किया. तो ये वो अपने अपने तरीके से जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तब वो करते हैं, और अभी भी ये चीज चलती आ रही है. आप अगर ट्रेंड्स की ही एक बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, अगर आप गूगल ट्रेंड्स पे आकर चेक करेंगे कि लास्ट 24 आवर्स में खालिस्तानी टर्म सबसे ज्यादा कहाँ से यूज हुआ है, तो नंबर 1 पे टॉप रैंक है वो है पाकिस्तान. तो पाकिस्तान जो है वो वहां से ही सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, और उसमें पाकिस्तान के वेरीफाइड अकाउंट्स भी शामिल है, पाकिस्तानी मीडिया भी शामिल है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी शामिल हैं. और इसमें वही नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है जो इन्होंने लास्ट ईयर मोहम्मद शमी को टारगेट करते हुए किया था, वही चीज अब वो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट यूज कर रहे हैं. थैंक यू. Thank you very much, Anshul Saxena, as well as Vikas Gujera, for joining us on this broadcast and putting this into perspective, as also Abhishek for getting us this big exclusive. Once again, Pakistan's diabolical plans have been exposed. Failing in other areas, Pakistan is now essentially resorting to cheap tactics, which is essentially reflecting by these Twitter trends and the 5th generation warfare that you're essentially looking at right now. Mega face off over the sensational Liquorgate sting. BJP's attack versus Aam Aadmi Party's counter-attack escalates. Belgavi allegedly commits suicide after 10 minutes audio tape alleging sexual abuse goes viral.